वर्टेक्स सर लॉन्गिट्यूड एक बार बता दो सर कैसे निकालना है सर एक बार वर्टेक्स से क्वेश्चन। Okay. Okay. So let's draw a PAB triangle. Let's assume we are going like this. This is A, this is our destination B, and we have the pole here. This is C. And let us say the vertex is inside. When is the vertex inside the triangle? When you check both these angles, angle A and angle B of the PAB triangle, and you see that both these angles are acute angles. These angles are less than 90 degrees, then we know that the vertex has to lie inside the triangle. So let's join PV also. So we have joined the vertex also with the pole. Now we know at the vertex, the great circle track always runs in the east-west direction. So great circle track running in the east-west direction. Papa vector PV is the meridian of the vertex, which is running in the north-south direction. So this angle has to be 90 degrees. Now to calculate the position of the vertex, latitude and longitude, you have to take any one of the triangles, PAV, Papa alpha vector or Papa Bravo vector. Any of the triangles can be taken. So which triangle do you want to take, beta? Sir, PAV. Okay. So we have selected PAV triangle. Now this PAV triangle, Papa alpha vector, is a special spherical triangle because we have a right angle at the vertex. And in this triangle, two things are already known to us. What is known to us? One is Papa alpha side. This is the colat of position A. And the second is angle A. Angle A was calculated in the basic great circle question to find out our initial course. So both these things are known to us. So what we do is we enter into this triangle and apply the Napier's rule. Let's apply the Napier's rule here. So we divide it into 5 parts. The right angle is at the vertex, so vertex goes on top. Bottom 3 parts we write 90 minus, 90 minus, and 90 minus. And we can fill up the parts. We can go clockwise or anti-clockwise in any direction. We can go. So let's go clockwise. So after vertex, the first part which comes is alpha vector side, AV side. So we have this AV side here. Then after that we have angle A. After that we have PA, Papa alpha side. After this we have angle P, and then we have Papa vector side. Now what is known to us in these parts? One is Papa alpha, this is known to us. Another is angle A, this one is known to us. So for finding the longitude, basically we have to find this angle P. So let's identify this in the circle. This is the part which we want to find out. Okay, 90 minus P. So once this angle P is known to us, we can easily calculate the longitude of the vertex. So you can apply the formula sine of the middle part. The middle part 90 minus PA is the middle part here, is equal to tan adjacent. One adjacent is 90 minus A, another adjacent is 90 minus P. And by applying that formula, you can find out angle P. Now this angle P
is the angle at the pole contained between the meridian of A and the meridian of vertex. PA is the meridian of position A, Papa Victor PV is the meridian of the vertex. So this is the definition of D long. So this angle P, which we have found out using Napier's rule, basically gives us the D long between position alpha and the vertex. So longitude of A is already given to us in the question. So we apply this D long to the longitude of A. Let's say longitude of A was given as 30 degrees. And this angle P which you have calculated, it comes to 50 degrees east. It will be an angle, no east and west here. So this angle is 50 degree, and from alpha to Victor, when we are moving in the easterly direction. Okay. When we make the diagram, we always follow these directions: north, south, east, and west. So when you are going towards the right side, it is always the easterly side. So from 30 degree east, you are going 50 degree more in the easterly direction. So what will be the longitude of the vertex? It will be 30 plus 50, that is 80 degrees east. So is it clear now, beta? सर ये एक क्वेश्चन में साउथ ऑफ ऑब्जर्वर था, लैटिट्यूड दिया नहीं था, तो साउथ ऑफ ऑब्जर्वर, तो उसमें जो हमारा MZD है वो नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन था. Right. So हमारे पास क्वेश्चन में if they do not give us latitude, sometimes they would tell us in which direction the body is. So once we know in which direction the body is, we know the azimuth of the body. So we know the altitude is named same as azimuth and MZD is named opposite to it. So in this case, if the body is bearing south, true altitude would be south and MZD would be north. सर एक बार रिपीट कर देंगे सर दोबारा. ओके बेटा, देखो नॉर्मली हम इन क्वेश्चंस में जो शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं उसमें हम MZD की नेमिंग करते हैं. हाउ डू वी डू द नेमिंग? MZD is named opposite to altitude. And how do we name the altitude? In whichever direction the body is, the altitude is named same. So if the body is north of us, altitude is named north. If body is south of us, altitude is named south. Now, most of the questions, they do not tell us the azimuth of the body straight away. So we have to find it using the observer's latitude and the body's declination. For that, we had discussed that shortcut method. Okay. Now, in some questions, it is possible. They may make it simple for you by simply telling you what is the azimuth of the body. If you know the azimuth straight away, no need of making a rough diagram, nothing. Whatever is the azimuth, the true altitude should be named in the same direction. And MZD should be named opposite to it. Okay, beta, did you get it? Yeah, okay, sir. Okay. Any more doubt, query coming, beta? सर ये पोलैरिस के क्वेश्चन में जो निकाल रहे हैं मेलमन एक्स से पीछे रेफर करके, किसमें बेटा? योर वॉइस इज ब्रेकिंग ऑफ, कैन यू रिपीट? पोलैरिस क्वेश्चन सर, पोलैरिस राइट. उसमें हम ट्रू एजिमुथ जो लेते हैं A0, A1, A2, उसके बाद ट्रू एजिमुथ मेलमन एक्स से पीछे से, तो वो सर लैटिट्यूड के रेफरेंस में लिया हुआ है. तो वो जो लैटिट्यूड लिया है वो DR लैट जो क्वेश्चन में दिया है वो लिया है या ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड जो हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन में उससे लिया है? बेटा किसी से भी कौन सा लैटिट्यूड लेके सेम ही आएगा, छोटा सा डिफरेंस है. because difference between DR and observed lat is not going to be much. और हमारे टेबल में लैटिट्यूड की वैल्यूज हैं, they are far apart. ठीक है सर. Okay. However, अगर कभी कंफ्यूजन हो भी जाए
it is better to take the observed lat in that case. Correct, sir. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. Or beta, any more doubts in any of the methods? स्टैगर्ड अपना स्टैगर्ड में सर जो हम लोग पहले जब पोजीशन डीआर पोजीशन निकाल लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन अपना ट्रांसफर करके एक डीआर मतलब ईपी पोजीशन निकाल लेते हैं, ईपी लेट ईपी लॉन्ग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पीएल ट्रांसफर करते हैं, पीएल लगाते हैं। सर जो उस टाइम में जो एमलेट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? Okay. When you are doing the plane and parallel sailing calculations, right? सर स्टैगर्ड में जब भी हम लोग ये अपना पोजीशन ट्रांसफर करते हैं ना सर, रन लगा के, एंड देन उसके बाद हम लोग उस पर पीएल भी ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद पीएल से जो हमें डीलैट मिलता है, फिर हमें डी डिपार्चर भी मिलता है, फिर हम लोग वो डीलैट और डिपार्चर के यूज से हम लोग डी लॉन्ग निकालते हैं। तो सर उस टाइम में जो एम लेट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, जो हमारा इनिशियल लेट लॉन्ग है उसके बीच का, या फिर जो फाइनल आया उसी को एम लेट मान के? Okay. Beta, strictly speaking, it should be the mean of your initial DR position and the EP which you have calculated. इन दोनों का mean जो है that should be the MLAT. ओके सर, तो ये ठीक है सर, क्योंकि कई जगह ना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि या तो मेरी वैल्यूज डेसिमल में आ रही थी और बुक में राउंड ऑफ की हुई थी, तो उसका ही मतलब डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। I will tell you, all the values in the book are rounded off. I think they have rounded off to decimal of a degree. So उसकी वजह से ये confusion हो सकता है. But इसमें अगर आप उसे round off भी कर देते हो to the nearest degree, many a times if the distance run is very small, usually the latitude is the same, initial, final as well as the mean. Many a times you will see that the latitude remains the same if you round it off to a nearest degree. And secondly, ये difference इतना कम होता है कि आप इसमें चाहे calculation में initial lat ले लो, चाहे final ले लो, चाहे mean ले लो. In all the three cases, the answer is more or less the same. Okay, so that's why it is not making much difference in the calculations. However, doing it fundamentally, the MLAT should be the mean of initial latitude and final latitude. If you are transferring a PL, that means the initial DR lat and the estimated position lat. और अगर कभी बेटा प्लॉट में आपको MLAT यूज करना हो, let us say you have a fix on the plot, you have the DR position also. अब आप उसमें DLAT और departure निकाल लेते हो. DLAT and departure you will get from the plot itself. Now you want to convert that departure into D long. So which latitude should you use? Whether you use the DR1 or the fix or the mean of both of them. So in that case, always keep this in your mind that there is one position in the plot which you are trying to find, that is the fix. And there is one position in the plot which is known to you. Most of the time it is the DR position or the EP position. So these two positions, the one which you want to find and the one which is there on the chart, they are your reference position. And if you want to take the mean lat, it should be the mean of these two latitudes. So if you keep that principle in your mind, तो फिर ये confusion नहीं होगा. ओके सर, एंड सर एक चीज और थी जैसे सर एक अपना एक ऑब्जर्वर लेट है और एक ईपी लेट है, और हमारा फिक्स उन दोनों के बीच में आया हुआ है. सो जो डी लेट की जो वैल्यू है सर, वो हम लोग मतलब किस पॉइंट पे लेके जाएंगे, ईपी लेट पे लेके जाएंगे या फिर ऑब्जर्वर लेट में या फिर नियरेस्ट में? मतलब फॉर एग्जांपल जब हम स्केल से जो फिक्स बनाते हैं उस वैल्यू को जो काउंट करने के लिए हम सर डॉट डॉट करके जब नीचे लेके जाते हैं, तो हम वो ईपी लेट पे लेके जाएं कि ऑब्जर्वर लेट पे लेके जाएं? क्योंकि सर मोर और लेस मतलब तो एक तरफ नियर होगा, एक तरफ ज्यादा दूर होगा, या फिर डिपेंड करता है? राइट. नाउ द डाउट इज दैट हमारे पास जो फिक्स आ गई उसे हम किस रेफरेंस लैटिट्यूड से मेजर करें. आप इसे किसी भी लैटिट्यूड से मेजर कर सकते हो, whether it is a fixed lat or it is the EP lat or the DR lat, any reference latitude which is there on your plot.
can be used to obtain your fixed latitude. However, the recommended latitude is the one which is nearest to the fix. फिक्स से सबसे नजदीक जो लैटिट्यूड आपको पता है कि दिस इज दैट लैटिट्यूड, यू नो दैट लैट, उसी को यूज करना चाहिए. रीजन बीइंग कि हमारे प्लॉटिंग में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगता है, द प्लॉटिंग एरर हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज. तो रेफरेंस लैटिट्यूड और रेफरेंस लॉन्जिट्यूड जब भी आप ले रहे हो, ट्राई टू टेक इट फ्रॉम द नियरेस्ट वन विच इज टू योर फिक्स पोजीशन. Okay, sir. Thank you.